इनफैक्ट दी प्लेस दैट आई कम फ्रॉम, वहां पर सबका बिजनेस ही होता है। मैंने कभी ये नहीं देखा था कि जॉब भी होती है, मतलब इट वाज कि आप बड़े so I come from Raipur, it's a place in Chhattisgarh and my family runs a business, मेरे सारे रिलेटिव्स का बिजनेस है, सब कुछ। तो मुझे लगता था कि बड़े होना मतलब बिजनेस शुरू करना, मुझे और कोई डेफिनेशन मालूम नहीं था। सो लाइक मुझे ये तो बिलीव था कि यार स्केल हो जाएगा ये। अगर मेरे फैमिली को पसंद आया है प्रोडक्ट, सबको पसंद आएगा। हम लोग बेसिकली 1 लाख रुपए महीना पहुंच गए रेवेन्यू एंड हमारा खर्चा 50-60 हज़ार था। सो वेरी हैप्पी मोमेंट, आई स्टिल फील वो मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट था लाइफ का। आज हम एक ऐसी कंपनी से बात कर रहे हैं और उनके फाउंडर से बात कर रहे हैं जो ऑल ओवर द न्यूज थे सारे गलत रीजंस के लिए। एलिगेशंस थे उनके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड के, खुद सीईओ के ऊपर स्पेकुलेशंस थे कि कंपनी शट डाउन कर रही है। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि इट ऑल टर्न्ड आउट टू बी समथिंग अनबिलीवेबल एंड टोटली समथिंग डिफरेंट। वी आर टॉकिंग टू वन ऑफ द टॉप वाई कॉम्बिनेटर कंपनीज फ्रॉम इंडिया टुडे। वी आर टॉकिंग टू सोनाक्षी नाथानी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बिकाई। इट्स नाउ कॉल्ड बिग, but Sonakshi now बहुत strong believer in building sustainable products and product market fit. This is one of the best conversations on resilience and rapid growth. Also, हम आज बात करेंगे on everything that's there to discuss in e-commerce and D2C. Sonakshi has been building products for almost 2 million e-commerce clients that Bikai and Big has. Watch till the end, but one last bit. It would mean a lot to me if you subscribe to Go Venture channel at this point. So, welcome, Sonakshi. Thank you so much for having me here, Pratesh. So, Sonakshi, I want to begin with a trick question first. I want to understand what happiness means for you and how happy are you right now? Yeah, so, of course, it's a tricky question, but, I keep asking this question myself every day because, as an entrepreneur, it becomes difficult at times to understand, इतना hard work कर क्यों रहे हैं, इसका end goal है क्या finally. So, for me, happiness is all about, like the things that we are doing every day. Is that making us sleep peacefully or not? If that's true, then definitely करना चाहिए. Otherwise, नहीं करो और ज़्यादा खुश रहो. So that is how currently I'm defining happiness. Got it. And from that, I think I want to move to probably one of the most difficult times for Big and Bikai, which was you're revolutionizing the way businesses operate on WhatsApp, right? But एक बहुत बड़ा controversy था that you had to face last year, right? बहुत सारे allegations हुए financial fraud के, and there were rumors of shutting down of Big and Bikai shutting down, right? And you were at one of your peak moments then, right? What happened here and kya hua? How did you deal with it? How did your team deal with it and this whole crisis? Yeah, Pratesh, thank you, for bringing this up. And definitely it was one of a kind lifetime experience for me as an entrepreneur and also us as a company. When you start a business, आपके दिमाग में बस एक चीज होती है, वैल्यू ऐड करना टू पीपल, द कस्टमर्स फॉर होम वी आर बिल्डिंग दिस प्रोडक्ट, एंड उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है. एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग 24/7 टुवर्ड्स दैट गोल. But then, and things started happening for us, in terms of progressing this company, raising funds, getting a lot of customers, fulfilling their requests, etc. But also on the way, you start creating an ecosystem where there are a set of people who, in some way start hating you or in some way benefit from, at least they think that they will benefit if something goes wrong with your company or with you. So, that all kind of happened, I would say. So to just, give some context to what exactly had happened was, there was an article by one publication which said Bikai is shutting down, and it happened around, I think it was exactly a year ago. It was around 29th July, and I still remember the date because it had hit us so much, emotionally, not from a company standpoint. And, the most worst part about that article was, number one, it was a motivated paid article by someone who thought they will get benefited by letting us down. Second thing, the facts that they had mentioned was,
not even cross-checked by the founder. Like they had called me up, they had asked me that, we are going to write this, these are the topics. I had clearly conveyed them, not just the author, but also the founders of that publication, that, these are not true, because, even if you write, it will not benefit you. The facts that you have written, for example, Bikai has not filed MCA for last 2 years, or Bikai just had 30 to 40 employees now. Bikai has, leased out a building, but now giving out floors, etc. I told them this is completely BS. यहाँ पे कुछ भी truth नहीं है, and लोग सामने देख लेंगे. But they didn't bother because they were paid to write that article. And, eventually that happened. The first article came out on 29 July. Second article came out where then again I was compared with a startup which had a female founder and which didn't do really well in Zilingo, the ecosystem. Yeah. So Zilingo, yeah. And that was again, something that had really hurt me for that day, for that 24 hours when the article was out. But the support from my team, support from our investors, and, in some way that motivated us to work even harder. The fact that it was not true, sab kuch andar acha hai, it didn't devastated anything inside. But at the same time, publicly shaming someone for things that has not even happened was really, hurtful in terms of ये ecosystem support किसको करना चाहता है. मतलब सिर्फ उन founders को support करेगा who keeps paying money to media, or, this ecosystem is built for supporting founders which are actually working hard and working towards a goal to fulfill. But, I felt, it's time to show the world, रुकना नहीं है इससे. In fact, 10 गुना और तेज चलना है. So that was the ideology. Team also came together, and that's it, just that it was a transition phase. We were just working on one product, Bikai, till then, till May ka month. And in the May, we had realized that, scaling up Bikai after a certain point is not feasible because the TAM is limited. People who are willing to pay and also has skills in terms of building an online store were limited at that time in India. So doesn't that mean कि मैं अपने सारे मार्केटिंग डॉलर्स उसमें डाल दूं और मेरे को ज्यादा यूजर्स आ जाए? जब टैम ही लिमिटेड है तो आई कैन नॉट कीप पोरिंग इन मनी. दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड बिल्डिंग प्रोडक्ट big.ai, and there TAM analysis किया. It's a great opportunity in terms of product, in terms of the customers that we are serving today. So that transition plus the article happened simultaneously. So it took some time to settle down as a founder, but eventually it happened. I think I remember reading somewhere that Michael Jackson had this whole had to use this whole a negative impact on his life, or a negative phenomena in his life, as a fuel to go forward and kick himself up every now and then. I think I remember Michael Jackson saying that there was this guy who was picked by his coach back in his 10th or 12th standard for the national team, or for whatever team they were selected for, and the coach said that you were not eligible for it. And Michael Jackson used that moment to fuel himself all throughout his career. And when he was getting when he was being inducted in the Hall of Fame, he invited that guy to his speech as well, I think, and he mentioned him in this speech, by the way. So I think a lot of people are able to use such moments to propel themselves forward and to show the world that we will take it forward. But I want to come back to Sonakshi. How did it impact you? Did it impact your business as well? Yeah, so in terms of business, it did not impact, honestly, because Bikai, if you look at as in terms of user base kya hai hamara, what kind of people use it as a product. It is, the micro to micro SMBs using Bikai. These are like people who read Navbharat, people who read Dainik Bhaskar, वो जाकर ये startup chronicles etc. नहीं पढ़ते हैं. So, for them, it was about product value add कर रहा है and keep using it. So that was great. Definitely there were 10, 15, 20 customers coming back saying कि हमने आपके बारे में पढ़ा, थोड़ा डर लग रहा है, आप बंद तो नहीं हो रहे हो. Then call करके उनको realize करवाया. But it's part and parcel of things. तब difficult लग रहा था because some part of our team was remote also. And वो डर गए आर्टिकल पढ़कर कि क्या पता ये सच है, हमारी जॉब जाएगी क्या, etc. But one town hall, repeat communication with the team, and their
अगर अंदर strong unity है ना, then nothing can impact you, even with your customers. Is what the conclusion that we came to after that article, and it made us fearless. हम डरना बंद कर दिए. हमने even customers को बोला कि हम आपसे ले क्या रहे हैं, आप तो प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हो, मतलब बंद होगा तो आप बताओ मतलब क्या जाएगा, वर्स्ट केस आपका बिकाई स्टोर चला जाएगा और तो कुछ नहीं जा रहा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, अगर मान लो आपने अज्यूम भी कर लिया बंद हो रहे हैं. So we became fearless in a way, and it was important, Pritesh, because the people who are communicating with customers, I had to instill that confidence in them कि वो confidence के साथ बाहर बोल सके कि यार आप बेस्ट प्रोडक्ट यूज कर रहे हो इस इंडस्ट्री का, मतलब आप क्यों टेंशन ले रहे हो ये सब की, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दैट वाज लाइक द ओनली जॉब वाज की टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन टीम, एंड एवरीथिंग वाज देन टेकन केयर. There's always a silver lining. What was the positive thing that came out of it? पॉजिटिव तो लाइक जो वो थ्रस्ट आया ना टीम में और जो यूनिटी आई है, मतलब अभी तक लोग काफी बार whenever we joke etc, and like we have hit multiple milestones after that with Big.ai, and हमेशा लोग ये बोलते हैं अभी हम जाकर उनको बोलें क्या, अभी बोले क्या आर्टिकल लिखे हैं, अभी तो मुंह बंद हो गया है. So it is amazing. I feel that we are blessed that something like that happened, so that it united the company, it united the team, and we have enough fuel to take it forward. There's a sense of belonging. There's a sense of purpose now. Yeah, there is sense of purpose. Correct. I think during one of our earlier discussions, Sonakshi, I remember we discussing about your chance interaction with Satya Nadella, right? When you were working at Microsoft earlier, right? Can you share some anecdotes or key lessons that you gained from your time there that have been significant for you or your journey with Big and now Big? Yeah, absolutely, Pritesh. Number one thing that I still remember, Pritesh, is being grounded and empathetic to everyone. So Satya visits. He used to visit, I'm not sure now, but he was visiting Microsoft Hyderabad campus for once every 6 months. So we used to see him once every 6 months, and वो ऐसा नहीं होता था कि बस वो visit कर रहे हैं, everyone is listening and हो गया done. Literally, every team from Microsoft in Hyderabad campus used to put up a project of sorts there. वो booth लगाते थे हम लोग and present करते थे हमने जो भी किया, and उनसे interact करने का मौका मिलता था. So, one thing that really, learned from Satya was empathy, like empathy towards everything that you do. And usse aisa nahi hai ki you cannot take hard decisions. For example, people confuses empathy with, dheela hona in business. For example, there is, you have certain kind of resources in the company, certain level of capital, and you had initiated a project jo acha workout nahi kiya. So having empathy doesn't mean कि आप lay off नहीं करोगे. Having empathy doesn't mean कि आप किसी को डांटोगे नहीं for poor performance. But empathy is all about how you navigate that as a challenge. Like for example, if you were to lay off, there should be a definitive reasoning of why you are doing it. It is empathy towards company, okay. But then the way you progress towards laying off people should be very, very empathetic. That people whom you are laying off should understand, they should also start valuing कि यार ठीक है, मतलब ये गलती हो गई and इस वजह से हुआ है. That is one, and second thing is being like very humble and grounded, Pritesh. Like Satya Nadella never differentiated in terms of whom he is communicating to. Always whenever that communication was happening with anyone, he used to be very humble. And, like every sentence, even if you go back after this podcast and listen to any of his talks, you'll feel that sense of clarity in his thought process. Har ek answer with clear articulation of thoughts hota hai, with clear articulation of why he's speaking that. And that comes only when you have empathy towards everything. So that were, some lessons learned from him in terms of this. Sonakshi, आप बोल रहे थे कि इवन कभी कोई ले ऑफ भी हो रहा है तो दे शुड विद एम्पैथी, इफ दैट इज डन विद एम्पैथी, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है. सही, एक्चुअली डज इट एवर हैपन? डज समवन गेटिंग लेड ऑफ एक्चुअली फील दैट वे? If communicated clearly, so if you see Stripe ka layoff, Pritesh, it was done gracefully. No one complained about it. Even if I see Shopify, I think I would rate, mild tha. Some were
aggressive, but most of them were, fulfilled. But if you see other kind of layoffs where, abruptly shutting down things, etc., वहां पर थोड़ा aggression create होता है. But at the same time, किसी की रोटी आ रही थी जिससे and वो बंद हो जाए तो बुरा तो लगता ही है. But at the same time, it should be done gracefully. Like anything in business should be done gracefully, not just this. Even saying no to people while raising investments or saying no to customers. So, for example, SaaS companies have a lot of, this criteria कि ICP है. अगर ये मेरे ICP में नहीं fall होते हैं तो मैं इनको नहीं बेच सकता हूँ. Then you have to gracefully say no. You cannot say कि आप sorry, आप छोटे business हो. So, like if done gracefully, at least you have done your part well. So it will not, आपको ऐसे blaze करते हुए वापस नहीं आएगा कभी. Got it. And जैसे Vikai ने onboard करा massive initial days में आपका, now you're big, you have your old product was Vikai, which is still an ongoing brilliant success, I believe. तो जैसे आपने onboard करा massive 2 million sellers को onboard करा था just 6-7 months में, I believe, right? क्या challenges थे? Could you walk us through them that you faced during this rapid growth phase, and कैसे handle करा this surge in demand? Yeah, Pritesh. So it was new to us. कभी नहीं देखा था ऐसा कि हो भी सकता है. But also at the same time कभी ऐसा भी नहीं था कि नहीं भी हो सकता है. मतलब बिलीव था कि इंडिया बहुत बड़ा है. अगर मेरे पेरेंट्स का बिजनेस है तो काफी सारे लोगों का बिजनेस होगा ऐसा. एंड इनफैक्ट द प्लेस दैट आई कम फ्रॉम, वहां पर सबका बिजनेस ही होता है. मैंने कभी ये नहीं देखा था कि जॉब भी होती है. मतलब इट वाज कि आप बड़े हो. So I come from Raipur. It's a place in Chhattisgarh, and my family runs a business. मेरे सारे relatives का business है, सब कुछ. तो मुझे लगता था कि बड़े होना मतलब बिजनेस शुरू करना. मुझे और कोई डेफिनेशन मालूम नहीं था. सो लाइक मुझे ये तो बिलीव था कि यार स्केल हो जाएगा ये. मतलब अगर मेरे फैमिली को पसंद आया है प्रोडक्ट, सबको पसंद आएगा. And then, things started rolling in. We got into Y Combinator. वहां पे सीखा scale actually. The first milestone that we hit was basically becoming profitable before entering into YC. And वो milestone इसलिए था because again, my family business background. वहां पर business चलाना मतलब profitability. So पहले तो हमने वो hit की at a very small scale. हम लोग basically 1 लाख रुपए महीना पहुंच गए revenue, and हमारा खर्चा 50-60 हजार था. So very happy moment, I still feel वो मेरा happiest moment था life का. Then Y Combinator में हुआ, COVID had hit. They advised us, they told us कि कैसे scale करते हैं, क्या क्या ध्यान में रखना होता है. So that's how journey started. And जब scale होता है ना, कुछ नहीं समझ आता. मतलब सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा होता है. कभी कुछ कस्टमर एस्केलेशन आ रहे होते हैं, कभी कुछ जैसे मान लो इस हफ्ते सेल्स अच्छी नहीं हुई तो वहां पर प्रॉब्लम चल रही है. कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है. इट्स लाइक जस्ट फ्लोटिंग इन द एयर. देयर इज नथिंग दैट यू कैन थिंक, बिकॉज वो बहुत फास्ट स्पीड में रोल हो रहा होता है. एंड glad that we were able to see that moment so early in our lives, and it was wonderful. Those times were wonderful. Awesome. I think I want to talk about थोड़ा सा e-commerce also, since you have tons of customers there, right? कैसे आप देखते हो, how do you see e-commerce and buying patterns also evolving right now, right? How do you look at that? Yeah, so e-commerce, if I were to define it, e-commerce in India versus e-commerce in rest of the world or US is very different. मतलब जमीन आसमान का फर्क है. हमें एक्चुअली नया टर्म कॉइन कर देना चाहिए इंडिया के ई-कॉमर्स के लिए. एंड आई विल गिव यू सर्टेन पॉइंट्स जो मैसिव डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिटवीन दीज टू ज्योग्राफीज. नंबर 1 इज द बाइंग पैटर्न, और आई वुड से द ट्रस्ट. इंडिया में इन ई-कॉमर्स लैक ऑफ ट्रस्ट इज एट 100 percentile और 200 percentile. कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता. एंड मे बी दैट्स वाई the platforms like Amazon, Flipkart has done really well. ये सारी marketplaces हैं, and most of the sales, e-commerce sales today, if we were to count that $1 billion market in India, maximum in दो platforms के through drive हो रहा है. Through individual websites, D2C websites, etc. If seen at a brand level, 25 से 30% revenue वहां से जाता है. बाकी 70% सिर्फ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जाता है. रीजन इज सिंपल. 1 इज लैक ऑफ ट्रस्ट. कितना भी कर लो वो ट्रस्ट नहीं आएगा.
And that's why, these patterns like cash on delivery, etc. started popping in, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था इंडिया में scale up करने का. But again, COD has brought in so much challenges. मतलब आपका RTO रेट इतना हाई है, मतलब एपरल इंडस्ट्री में 40 to 50% तो RTO हो जाता है. सो इतना खर्चा करना, यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव नहीं होना, इन दी एंड इट स्टार्ट्स टू बिकम अ ब्लॉकर फॉर एनी ब्रांड टू ग्रो. तो वो एक चैलेंज ट्रस्ट से शुरू होता है इंडिया में, वर्सेस यूएस में इट्स लाइक ट्रस्ट तो है, मतलब पीपल रोली ट्रस्ट वेल कि यार मैंने ऑर्डर किया ऑनलाइन तो मेरे पास आएगा ही आएगा. दैट ट्रस्ट इज देयर. सो दैट इज वन. Second thing, I feel in e-commerce is, about the skill set. So, you require a lot of online skill set to build a business online. So, for example, आपको अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बनाने आना चाहिए, और सिर्फ बनाना नहीं, you should also know how do you scale it up to generate revenue. Third thing, आपको एड्स चलानी आनी चाहिए कि कहाँ पर खर्चा करूँ तो यहाँ पर ऑर्डर आएगा. ये सारी चीजें इंडिया में एट अ मास लेवल एग्जिस्ट नहीं करती है. इवन टुडे, even today there are just 800 brands in India who are doing decent revenue in the D2C space. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. The market is very small, and even these set of people heavily rely on agencies to operate their e-commerce business. Not that they have built a really good skill set. So that is one second area where India will have to improve when compared to US, जहां पर एक छोटा SMB भी इतना hands on है कि वो खुद की एड्स खुद चलाता है, सब कुछ खुद करता है. Only enterprise level brands are going towards agencies and driving revenue through them. So ये एक major difference लगा, and I feel if these two blockers are solved with time, India can also see a massive scale in e-commerce. I think I want to come back to Samakshi, your original point जो आप बोल रहे थे कि इंडिया में ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट बहुत मिसिंग है ई-कॉमर्स ब्रांड्स में, कि मैंने ऑर्डर किया था घर पे आएगा कि नहीं आएगा. Why do you think that difference is there इंडिया एंड यूएस के बीच में? One is purchasing power, Pritesh. अगर मान लो आपके कंट्री का कैपिटा इनकम ही $2,500 है, विच इज क्या 2 लाख रुपए साल का, तो आप एक 400 रुपए का या 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने के पहले 20 बार सोचोगे कि यार ये मेरे लिए वर्थ इट है कि नहीं, एक बार आ जाए भाई फिर मैं देखता हूँ. वर्सेस यूएस में $55,000 है पर कैपिटा इनकम. सो ह्यूज डिफरेंस. दैट इज वन. सेकेंड, आई बिलीव इज आवर अपब्रिंगिंग, प्रीतेश. मतलब हर चीज को आप, जैसे बचपन में नहीं होता है कि आप ट्रेन में भी अकेले जाओ तो बेटा उनसे खाना मत लेना, ऐसे किसी स्ट्रेंजर से खाना नहीं लेते हैं. So that upbringing also brings a lot of difference. So these two, यहाँ पर वही सप्लाई डिमांड, मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो लोगों की अपब्रिंगिंग ही ऐसे होती है कि पहले तो खुद का रख लो, पहले तो मतलब हमें मिल जाए फिर दूसरे को मिलेगा. So even if you see, traffic is a result of that upbringing, right? कि पहले मैं तो काट के घुसता हूँ फिर दूसरा आता रहेगा. So I think that is the reason. I think Sonakshi, but a lot is evolving, right? Be naya wave e-commerce mein, which is D2C, right? Not naya, but it's been some years now. But that is changing a lot of things. How do you see this whole ecosystem evolving? Yeah, definitely things have changed. Like the 800 brands that I'm talking about, this number was mere 100 around 3 years back. So it has, almost 8x'd itself in terms of the growth in 3 years. Yeah. So massive growth आने वाला है definitely by 2030. I feel इंडिया में e-commerce काफी ज्यादा mature हो चुका होगा, maybe at levels where US is today. And evolution again is happening because people have to adopt. मतलब option है ही नहीं. अगर आप adoption कर ही नहीं रहे हो तो, जैसे for example प्रीतेश, आपका कोई favorite brand होगा पक्का से ऑनलाइन ब्रांड, अब आपको खरीदना है, उसने ऑनलाइन ओनली कर रखा है, फिर तो आप खरीदोगे ही ना. एंड मान लो वन टाइम आपने सीओडी कर दिया, बट सेकेंड टाइम तो आप ऑनलाइन पेमेंट से नहीं डरोगे. एंड आपके पास तो अब इंडिया में गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग सो मच, यूपीआई आ चुका है, यूपीआई में ऑटो डेबिट्स आ चुके हैं अब तो, यू कैन इनेबल सब्सक्रिप्शन थ्रू इट एक्सेट्रा. सो डेफिनेटली टाइम्स आर नाउ चेंजिंग एंड इंडिया हैज अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर. इट इज इवॉल्विंग फॉर श्योर. Do you see like कि बड़े बड़े brands ऐसे Zara है या जो भी है, and they will come out of India also now in the coming years? It will, definitely it will. Like if you see qualities of new brands like Firebolt को देख लो आप, या फिर apparel industry में भी even XYXX, और
there are multiple brands who are doing extremely well. So, for example, if you take House of Masaba, it's a really cool brand from India. And what is stopping us to become Zara's of the world? It's just number one is, of course, mindset. But mindset has also evolved to a certain extent. And second thing is capital. Capital आपको रोक सकता है to become a global dominant brand, but capital की भी कोई कमी नहीं है. Like VCs are flocking in towards Indian startup to put in money and see how it grows. So I feel consumer facing brands तो definitely Zara क्या मतलब वो Armani Gucci's of the world भी बन सकते हैं, but time लगेगा थोड़ा, but it is going to happen. I think one more big factor here is that that makes your global brand is global distribution, right? And not just global distribution, but also global appeal. कि मतलब global demand भी तो होनी चाहिए. Yes. How do you see जो अभी current D2C brands हैं इंडिया के, how do you see them faring on that part? Yeah, so iska na Pritesh, again there are two parts. One is people who are very focused towards Indian audience, and Indian audience पे focus अगर आप कंज्यूमर साइड से देखो तो हो जाता है कि आप रोज डिस्काउंट निकालो, रोज पुश नोटिफिकेशन भेजो, एंड जब इंस्टाग्राम में आप कुछ भी कंटेंट अपलोड कर रहे हो तो उतना क्वालिटी नहीं हो चलेगा, बस इट शुड कन्वे कि आपको सस्ते में मिल रहा है, कुछ डिस्काउंटेड मिल रहा है, अगर आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो. बट इफ यू आर टारगेटिंग प्रीमियम सेगमेंट ऑफ इंडियन ऑडियंस प्लस wanting to go global, आपको डे वन से आपकी चीजें ठीक रखनी पड़ेगी. लाइक सर्टेन प्रिंसिपल्स की डिस्काउंट आता है साल के 2 सीजन्स में, उसके अलावा नहीं आता है. सेकेंड थिंग, आई विल नेवर डू अ ब्लास्ट प्रमोशनल कैंपेन रिस्पेक्टिव कौन है, वो कहाँ से है, टू एवरीवन. सो प्रिंसिपली अगर आपका माइंड में क्लैरिटी है ना कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, पहले तो बात उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. सेकेंड थिंग, हाउ यू आर पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ एज अ ब्रांड. इफ यू Pritesh see outside in the US, there are small brands like Dr. Squash नाम है उनका, वो साबुन बेचते हैं, एंड दे आर डूइंग $10 million अ मंथ रेवेन्यू. वो इतने लार्ज स्केल में ऑपरेट कर रहे हैं. इंडिया में एक साबुन बेचना ऑनलाइन D2C ब्रांड, लोग सोचेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, बट दिस इज हैपनिंग. सो दे विल हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्वालिटी पैरामीटर्स पे मेंटेन रखना खुद को. ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन Pritesh इट इज अगेन वेरी इजी इन द इंटरनेट टाइम्स. मतलब आपको देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल, एंड especially if it's online, through your online website or through marketplaces, वो तो आप ऐसे ही क्रैक कर सकते हो globally. There is no problem with that. The other challenge with D2C brands keeps on saying is, हम लोग यार शिपमेंट वाली चीज हम कैसे फिगर आउट करें. मतलब हम भेज तो देते हैं, बट अगर वापस आ जाए या कहीं अटक जाए तो हमारा लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है. बट देयर दे विल हैव टू अपस्किल देमसेल्व्स कि यार वहां थोड़ी ना आप 20 रुपए का साबुन बेचोगे. इफ यू सी दैट साबुन वाला कंपनी विच आई एम टॉकिंग अबाउट, दे आर सेलिंग अ सोप एट 800-900 रुपीज, एंड वो उनका चीपेस्ट वर्जन है. तो आप वैसे भी तो सोचो, वहां बेच भी तो 1000 रुपए का रहे हो, तो अंडरस्टैंड की होंगे लॉसेस, थोड़े होंगे, बट इट शुड गेट बैक टू यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव. Awesome. Got it. But let's come back a little bit to the company BIC. आपने रेज करा कैपिटल फ्रॉम सम ऑफ द मोस्ट टॉप एंड रेप्यूटेड फंड्स एंड प्रोग्राम्स जो हैं अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम में. वाई कॉम्बिनेटर से रेज करा आपने, सेक्वाया से रेज करा आपने. नाउ दैट्स चेंज, पीक 15 हो गया. टेल अस फर्स्ट अबाउट हाउ यू गॉट इनटू YC. Yeah, Pritesh. So YC again, it was accidental for us. COVID हो गया था, मार्च था, एंड वो कुछ रेगुलेशंस आ गए थे कि घर पे ही बैठना है अभी. सो टीम बहुत छोटी थी, सिर्फ मैं, नाशू, मैं को फाउंडर थे, एंड 2 लोग और थे हमारी टीम में. तो हम लोग घर पे बैठ के टाइम पास कर रहे थे. दैट्स व्हेन आई सॉ, तब मैंने ट्विटर में अपना अकाउंट बनाया था, देख रही थी ट्विटर में चलता क्या है. सो आई सॉ माइकल सीबल का ट्वीट की YC has gone all remote, and people from different geographies are now they can apply without flying here. So that's when, and YC के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पहले सुना था, मैं उनके YouTube में वीडियोस देखती थी, बट मुझे नहीं पता था कि it is such a big accelerator and it can change your life forever. So देखा मैंने प्रोग्राम कि क्या क्या है, कैसा है, इंटरेस्टिंग लगा काफी. एंड एट द सेम टाइम हमने एक्सेल ने भी कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ था स्टार्टअप्स के लिए,
छोटा सा प्रोग्राम, वो कुछ ऐसे, उसमें कैपिटल नहीं मिलता था बट मेंटोरशिप मिलती थी। सो वहां पे अप्लाई करने के लिए ना आपको वीडियो अपलोड करना था एक्सेल में। तो हमने 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके रखा था, मैंने और आशु ने, कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सो जब वो माइकल सीबल का ट्वीट था कि आज लास्ट डे है, करो, रिमोट है, तो हमने सोचा यार टाइम तो लगता नहीं है। आशु ने मेरे को बोला नहीं मैं जानता हूँ वाईसी बड़ी चीज है, नहीं होगा, टाइम वेस्ट मत कर। मैं बोला यार टाइम थोड़ा ना लगेगा, मेरे को भरने दे एक बार एप्लीकेशन। तो भर दिया एंड देन आई नेवर यूज टू चेक माई जीमेल एंड 2 दिन उनका एक्सेप्टेंस आ चुका था एप्लीकेशन का फॉर द इंटरव्यू। मैंने 2 दिन बाद चेक किया, अरे यार ये तो एक्सेप्ट हो गया है, इंटरव्यू है। दैट्स व्हेन वी गॉट अ बिट सीरियस कि यार अब तो अच्छे से तैयारी करके जाना है। एंड देन देयर वर लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन कि आप ऐसे प्रिपेयर करो, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, इन सबको ध्यान दो। देयर वाज वन वेबसाइट कॉल्ड आई पॉल ग्राहम, जहां पर मतलब देयर इज अ 30 सेकेंड टाइमर चलता रहता टाइम है। वाला, सब वैसे वाले तो करते। सो वैसे ही किया एंड हो गया। तो बहुत अच्छा लगा होकर। एंड देन प्रोग्राम वाज लाइफ चेंजिंग, एज यू नो प्रितेश, आपको तो पता ही होगा। इट्स लाइक समथिंग दैट फाउंडर्स डोंट सी यूजुअली। सो या दैट्स हाउ इट हैपेंड। एंड कभी भी वेंचर कैपिटल फंड रेज को ऐसा नहीं देखा कि ये करना ही करना है। सीखा ही वाईसी के बाद कि वीसी क्या होते हैं, फंड रेज कैसे करना होता है, आप कैसे एक साथ सारे इन्वेस्टर्स को रीच आउट करते हो, कभी भी जाकर बात नहीं कर लेते हो। यू हैव टू पुट इन योर टर्म्स एज वेल इफ योर कंपनी इज डूइंग वेल, यू हैव टू स्टेप बैक इफ कंपनी इज नॉट डूइंग वेल। आप मल्टीपल इन्वेस्टर से रेस करो, एंजल से रेस करो, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो YC taught us were extremely valuable, and hence काफी अच्छा रहा journey. And same with Sequoia, Pritesh, similar journey. It was not accidental, but I had emailed Sequoia saying that we are planning to raise our Series A. Would you be interested in taking this forward with certain metrics? And they got back saying yes, they are. And within a week or so, the process was done, finished, and term sheet had come in. So that's how things happened. Yeah, brilliant. I think before we get to the Sequoia bit, which is a brilliant story, I can already see. But मैं ना बहुत एक YC community ना बहुत supportive है. I want to talk a little bit more about Y Combinator. बहुत ही supportive community है. Even when you are interviewing for YC, I believe बहुत सारे founders आ जाते हैं कि they've opened up Calendly links कि आप हमारे साथ mock interviews कर सकते हैं and all of that. But a question that I get asked a lot, especially from people who don't understand the YC ecosystem, कि YC से आपको क्या फायदा हुआ? What did you learn from YC? ठीक है. So quick question to you, Sonakshi. ठीक है. What are the top 3 things that you think you got from YC? टॉप 3 बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है जितना सीखा है वहीं से सीखा है, बट या आई कैन सम इट डाउन. वन, अगेन आई वुड पुट it is ki your success or failure depends on you, not on your competitor, not on your investors, not on your advisors. आपके ऊपर ही आप उसको कहाँ लेकर जाते हो. As you know, YC used to say most of the startups die because founders के बीच में equation नहीं सही रहती है. So this is some reason which I feel कि यार ये तो founders के हाथ में ना, ये तो कहीं और है नहीं. And when we join YC जैसा program, or usually also while running the company, we feel कि इसकी वजह से मेरा लेट्स से ग्रोथ नहीं हो पाया, या यार इसकी वजह से मेरा ना PMF नहीं हो पाया. सो ऑलवेज देयर इज अ ब्लेम रेडी कि यार अगर ये होता तो मेरा स्टार्टअप अभी कहीं का कहीं होता. ऐसा नहीं है. मतलब इट्स ऑन फाउंडर्स हैंड. एवरीथिंग इज ऑन फाउंडर्स हैंड. मेकिंग इट अ $1 billion कंपनी और keeping it humbly profitable, it's on us. So that is one. Second thing is which they taught us was, I would say, fundraising. Fundraising is not just about आप अपने metrics दिखा दो and fundraise कर दो and हो जाएगा. It is beyond that. There is certain level of creating that FOMO environment. Making investors lot excited about your product, and also at the same time there is a skill set to close it fast. ये fundraising का पूरा A to Z YC ने सिखाया. And third thing, which I didn't learn during the program, but after the program, while interacting with the partners, was, clarity. Clarity in terms of
how you're running your company, where you are taking it towards, what kind of metrics define you successful or not successful in your mind. And at the same time, last thing which they taught us was, you really need money that you are fundraising. वो हमेशा पूछते हैं कि आपको पैसे चाहिए भी क्या जो आप फंड रेज कर रहे हो यार, चुपचाप बैठो, कंपनी बिल्डिंग में ध्यान दो. सो लाइक ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो उन्होंने आफ्टर द प्रोग्राम दिया, लाइक ड्यूरिंग दोस one-on-one conversation helped us a lot. Got it. I think that's a very quick summary of a lot of things. I think when you were talking, I was also thinking कि हाँ ये बात तो सही है. This was probably one of the best things that I learned from YC. I think it was a good quick summary, I think. But coming back to say Big, कैसे मतलब how and why did Big.ai get launched, especially after आपको बहुत सारा success मिला, such wide distribution with Bikai, then you moved on to launching Big.ai. How did you get there? Yeah, so thank you for asking that. Like with Bikai, we grew in terms of revenue from October 21 to March 22. We grew almost 10x in our monthly MRR, and everything was great back then. But at the same time, there were two things that were happening. One was I was working on a pilot project since we were already Meta, like DSPs to Meta, which is like we had those access to WhatsApp APIs, etc. So we were working on a small project which we wanted to build for bigger D2C brands, how we enable marketing for them. And, while working, वो तो project चल ही रहा था. And at the same time, with the numbers in Bikai, we realized that to have a massive scale with Bikai, that a VC funded company should deliver, TAM बड़ा होना चाहिए. TAM बड़ा करने के लिए आप क्या करते हो? आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स एक्वायर करते हो, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर. अब इनिशियल बेस Bikai का तो ऐसा था कि जिनको खुद ऑनलाइन स्टोर बनाने आता है, दीज आर लाइक यंग ब्रिगेड्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड बिल्डिंग देयर स्टोर. ग्रेट. अब आपको और मास में जाना है तो आपको ना स्किल सेट कम वाले लोगों को भी लाना पड़ेगा, जिन लोगों को बनाने नहीं आता है बट मन है बनाने का, उनका बिजनेस तो है ही जो चल रहा है. सो हम उनको एक्वायर करने लगे. तो उनको एक्वायर करने के लिए वी स्टार्टेड डूइंग कपल ऑफ थिंग्स. वन वाज स्टोर क्रिएशन भी हम करके दे रहे थे, डिजिटल मार्केटिंग एज अ सर्विस भी हम करके दे रहे थे, बट इनके पैसे नहीं बना रहे थे हम. मतलब हम जो सब्सक्रिप्शन था Bikai स्टोर का, ऑनलाइन स्टोर का, 15,000 रुपए, 30,000 रुपए साल का, उतने में ही सब कुछ करके दे रहे थे. So to deploy that at that scale, we had to hire a lot of people, doing operations, delivering those stores. So operation heavy होने लगा business काफी ज़्यादा. And from a gross margin standpoint, it didn't make sense. मतलब it was too early in the journey. 2-3 महीने हुए थे scale किए हुए, but ऐसे ना फाउंडर की तरह वो आ गया इंट्यूशन कि यार मतलब अगर मैं ऐसे करते रहूं मेरा रेवेन्यू तो बढ़ेगा, बट प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है? आई कैन नॉट आई दैट विद जस्ट दिस प्रोडक्ट. सो ये चीज हुई. हम समझ गए कि टाइम लिमिटेड है इफ वी वांट टू स्टे प्रॉफिटेबल और हैव मेकिंग यूनिट इकोनॉमिक्स मेक सेंस. And at the same time, Big.ai as a value proposition, because I was handling Bikai ka marketing myself. And because of the scale of the product, it's more like a consumer facing product. It's not like a B2B product. So वहां पर मुझे एक दिक्कत होती थी personally कि I was using multiple tools like MoEngage to send push notifications. I was using AppsFlyer for attribution of my app install. I was using Freshchat to manage customer support. यार मेरी तो एक ही टीम है, वो क्यों 10 टूल्स यूज करें? That's when we realized कि कुछ एक होलिस्टिक प्लेटफॉर्म है ही नहीं फॉर अ मार्केटर. एंड दैट वाज द विजन बिल्डिंग Big.ai कि यार हम D2C ब्रांड्स के लिए एक होलिस्टिक प्लेटफॉर्म लाएंगे जो वो लोग यूज कर सकते हैं टू बिल्ड देयर मार्केटिंग एंड सपोर्ट फनल. बिकॉज अगर आप देखो इंडिया में 100 करोड़ भी जो रेवेन्यू कर रहा है ब्रांड, उसकी टीम टोटल टीम 15 लोगों की है, जिसमें 2 से 3 लोग ही मार्केटिंग प्लस सपोर्ट मैनेज कर रहे हैं. So we thought with that vision, we'll build Big.ai, and that happened. It started picking up. We started onboarding big brands like Firebolt, as I told you. We have onboarded Masaba. We have onboarded like XYXX and Shopper Stop. So, like things started rolling in. That's when we realized that it's time to scale up Big.ai. So these two transitions happened together, and we feel glad कि वो हुआ. So that's how journey started. And who would be your, say, top clients? You mentioned a few clients for Big.ai, and how did you crack them? What's the story behind cracking them?
सो टॉप क्लाइंट्स तो जो मैंने बोले यही है अपने शॉपिंग स्टॉप हो गया, फायरबोल्ट हो गया, वी हैव जूसी केमिस्ट्री ऑन बोर्ड, रेड्स एंड पे, दीज आर ऑल ब्रांड्स डूइंग 100 CR प्लस. क्रैक करना अगेन बहुत हल्ला बनाया हुआ है मार्केट में. सो मेरा आइडिया था बिकॉज अगेन इन्वेस्टर से इनपुट्स आए हुए थे कि मार्केट काफी डाउन जाने वाला है आगे भी, सो कंजर्व कैश एज मच एज पॉसिबल. सो हमने एक माइंडसेट बनाया था कि वी विल नॉट इन्वेस्ट इन ग्रोथ अंटिल वी फाइंड PMF विद big.ai. एंड जब आप एक बार क्रैक कर लेते हो ना विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग ब्रांड्स को अट्रैक्ट करना, सो वी स्टार्टेड कोल्ड ईमेलिंग दीज ब्रांड्स कि hey, we have this solution for the problem you must be facing, would you like to chat? And they were coming back. We saw great 60% open rates to 3% reply rates on our drips, and people started coming back. We started speaking with them and understood their pain points more deeply. तो ऐसे दो ब्रांड करके हर महीने ऑन बोर्ड हुए. देन दिसंबर में एक स्केल आया जहाँ पे हमने 8 ब्रांड्स ऑन बोर्ड किए एक ही मंथ में. एंड दैट्स वेयर ना एक आपको जो नहीं बोलते हैं एक एडिक्शन हो जाती है कि अगर फ्री में ही ब्रांड्स आ रहे हैं तो मैं खर्चा क्यों करूं यार, मतलब मैं तो इसी को स्केल करूं ना. सो वी स्टार्टेड स्केलिंग अप आवर आउटबाउंड मोशन. मतलब हम लिटरली देन ज्यादा लोगों को मेल भेजना शुरू करे, वहां से ज्यादा लीड जाने लगी. एंड बाद में मुझे पता चला यार ये तो मतलब क्लासिक आउटबाउंड सेल्स बोलते हैं इसको ABM बोला जाता है, अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग. हमें इतनी टेक्निकलिटीज नहीं आती थी, बट दैट्स हाउ वी ग्रू. टुडे वी आर 70 प्लस ब्रांड्स, 8 महीने हो चुके हैं ऑफ सेलिंग big.ai. सो आई फील इट्स without spending any dollars on marketing, I feel it's a decent growth journey. बहुत सारा congratulations Sonakshi on that. Oh, thank you. But yeah, miles to go. I think then you launched another product right recently, which is Manifest.ai. आपका launch event भी था अभी. Congrats on the launch also. But it's your new AI-powered shopping assistance for e-commerce businesses, right? बहुत promising sound हो रहा है. Could you give us a glimpse into how this platform will benefit e-commerce? Yeah, so Manifest as a product, or I would say as a project, it has a mission to benefit e-commerce with AI. With that mindset, we started putting in efforts, and we built again. जैसे हमने big.ai एक small project किया था side में, हमने Manifest की एक छोटी सी team scoop out करी, 8 engineers. And the CTO also started working, my co-founder, and 1 product manager. And हमने वही बोला कि let's brainstorm on हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कैसे benefit कर सकते हैं. So the obvious choice for us was, since we have been part of this ecosystem for last 3 years, we believed कि जो consumers है सबसे पहले हमें उनके benefit के लिए सोचना चाहिए. Brands का तो उसकी वजह से benefit हो ही जाएगा. And then we can, effectively optimize जो brands का day-to-day operations होता है towards e-commerce. So that's how, our thinking started to begin. And the first product that we launched is AI shopping assistant. And what it basically does is, अगर आप कोई offline store में जाओ and वहां पर आपको जो एक personalized experience मिलता है through a salesman, वो आपको Manifest देगा on shopping sites. And not just pre-sales वाला benefit देगा, but also at the same time पोस्ट सेल्स आपको जो इंक्वायरीज होती है या फ्रस्ट्रेशन होती है विद ब्रांड्स, मेरा ऑर्डर कहाँ है, या फिर मुझे रिफंड करना है, मुझे एक्सचेंज चाहिए, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, या फ्रॉड हो, आपको मैं 1 स्टार दे रहा हूँ, everything will be handled by Manifest AI. So that is how it is built. And थोड़ा एक selfish reason भी था. We always wanted to sell in the US, and big.ai we started selling from India. And once you start selling in certain geography ना, आपका रोड मैप भी वहीं का बनता जाता है. And now, like with big.ai, we have clients from Singapore and Dubai as well. But with Manifest, it was very clear from day 0 it will be US. उसको वहीं से ही शुरू करना है, भले कस्टमर लाने में टाइम लगे, महंगा लगे, वहीं से शुरू करना है, वहीं के ब्रांड्स आने चाहिए. So that's how journey started, and it has been now 3 weeks of launch. We have now around 30 customers on Manifest. Oh, nice. How do you sell in the US? What's your basic go-to market for that? Same. No marketing dollars spent. Yeah. It's like cold reaching out, because एक चीज अच्छी हो गई. When you stay in the same industry for all the products that you build, you exactly know
किस टाइप के यूजर को क्या बेचना है, उसको क्या वो पॉइंट होगा, उसका क्या पेन पॉइंट होगा जो आप मेल पे लिख सकते हो, आपको डेटा कहाँ मिलेगा, वेयर यू कैन फिगर आउट दीज टॉप D2C ब्रांड्स इन US और एनी अदर कंट्री. सो अगेन दी सेम फॉर्मूला दैट वी अप्लाइड कि यार बॉस खर्चा नहीं करना है पहले तो यूजर्स, क्योंकि प्रोडक्ट भी तो आधा अधूरा होगा ना, वो थोड़ी ना पूरा बन जाता है. सो वी स्टार्टेड रीचिंग आउट एंड वर अमेज्ड टू रियलाइज कि वहां पर people are so looking forward towards early adoption of softwares. They were so happy कि हमें चूज किया गया as early adopters. So really glad that it worked out, at least in initial 3 weeks. Awesome. I think Sonakshi, I want to understand, since you are building an AI product, आप already एक AI assistant बना रहे हो, how do you see AI further influencing the e-commerce experience in the coming years? Especially इतना सारा LLM, ChatGPT, OpenAI, Bard, and इतना सारा discussion चल रहा है. तो how do you see that in the e-commerce space? Yeah, so Pritesh, two things again. One is e-commerce would require a company in itself, beyond just being a layer on OpenAI, to actually disrupt e-commerce with AI, because it's a difficult thing. Like you have to crack consumers. It's not that ki aap, just for example, with ChatGPT, you can build products like email copywriting आप ease कर दो, या फिर आप SEO writing ease कर दो. एक कंज्यूमर है जो एक ब्रांड के पास आया है, नाउ यू हैव टू यूज AI इन सच अ वे कि वो उसको कन्विंस कर दे बाय करने के लिए. सो इट्स अ टू वे स्वॉर्ड. आप कैसे उसको हैंडल करोगे? So one thing is like not just fine tuning of these layers which exist today, but also you'll have to build your own models. So जब models बनने लगते हैं is when the disruption start happening. But बहुत clear तरीका है to disrupt e-commerce with AI. If I were to summarize it, there are few parts of e-commerce. One is like search, recommendation, then orders, then customers, then loyalty and referrals, of course. एंड दी FAQs जहां पर कस्टमर्स के साथ बातचीत चलती है. इसके अलावा देर इज नो सच, आप हर चीज को इन बकेट्स में डाल सकते हो. सो इफ यू आर एबल टू फिक्स दीज स्ट्रक्चर्स विद AI एंड इनेबल कंज्यूमर्स देयर एक्सपीरियंस टू बिकम ईजियर, I think that's the future, and I believe a lot of existing players which are really, really big in the market can get disrupted by this. Got it. And Sonakshi, I have another trick question for you here. That why do you think companies, because e-commerce ना seems like a जो classic Indian mentality में बोलते हैं धंधा की तरह लगता है, right? कि आप सामान लेकर आते हो, सामान बेचते हो. But still, why do you see so many e-commerce companies fail? Not a lot, but still a lot of e-commerce companies fail, right? Yeah. Pradesh, सबके डिफरेंट रीजंस होंगे, बट द कॉमन रीजन जो देखा है हम लोगों ने अभी तक इन 3 years ऑफ एक्सपीरियंसेस की, अगेन ट्राइंग टू ग्रो समथिंग विच इज नॉट PMF, सेम लाइक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. अगर मान लो आप, अगेन चलो साबुन का एग्जांपल लेते हैं, आप साबुन बेच रहे हो, आपको ग्रोथ मिल रही है, आपके ट्रैफिक में हर महीने 2 लाख लोग आ रहे हैं, आपको रेवेन्यू आ जा रहा है हफ्ते का 50 लाख. But the question that a founder should ask themselves is कि यार ये ग्रोथ मैंने कहीं खरीदी तो नहीं है, is it organic growth, क्या ये लोग रिपीट परचेज कर रहे हैं कि नहीं. And before you get answers to those questions, please do not scale. So the common mistake that I've seen is कि आप कोई भी वेबसाइट खोल लेना, सिमिलर वेब में डाल के देखना, 60-70% पेड ऑडियंस है. यार 70% लोग अभी भी तभी आ रहे हैं जब आप उनको खर्चा करके एड दिखा रहे हो. तो आप ये सोचो कि मतलब उनको नहीं आ रहा प्रोडक्ट पसंद, वो एक बार खरीद रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, दूसरी बार भी वो तभी खरीदेंगे जब आप डिस्काउंट दोगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे. सो ये मैट्रिक्स जब तक सॉर्टेड नहीं है किसी ब्रांड की, डू नॉट स्केल. अगर आपने नहीं सॉर्ट करके स्केल किया है तो 100% प्रोबेबिलिटी है फेल होने की. सो आई बिलीव दैट्स द मेजर रीजन ऑफ ब्रांड्स फेलिंग टुडे. Got it. If you enjoyed this, it would mean a lot if you subscribe and share your thoughts, reviews and the guests you want. दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में.